अभी हम आए हैं ऋतुगंध रिसोर्ट वाई में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी हम आए हैं ऋतुगंध रिसोर्ट वाई में। ये बहुत ही नेचर के करीब है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, पीसफुल है, रिवर फेसिंग है ये। यहाँ से आपको रिवर का व्यू मिलता है। ये वाई में है जो महाबलेश्वर से थोड़ा आगे है। जस्ट सी द सराउंडिंग्स। So after relaxing on resort, we went Dhom Dam in evening, which is around 10 km from the resort. It is built on a river Krishna. This is really a cool place to enjoy boat rides and watch the still calm water of river Krishna. Witness the far-off mountains surrounding the place. You will definitely enjoy the cool breeze in the atmosphere here. It's a huge backwater of the dam where one can enjoy boating, water sports and various rides at this place. Yeah. Hi. Hi. As the sun submerging below the horizon, we step on the speedboat, ready to absorb ourselves in the enchantment of nature's lap. In the whisper of the wind and the embrace of silence, we find comfort. Sailing through nature's canvas, lost yet found, in the middle of this beautiful lake. So finally, after this beautiful experience, we all enjoy the horse riding. And after that, we spent some time around the lake. It was really a beautiful place where you just want to sit and relax. यहाँ पे काफ़ी लोग प्री वेडिंग शूट भी करने आए थे एंड काफ़ी लोग कैंपिंग के लिए भी आए थे. And after this beautiful experience, we went back to resort. And after dinner, we enjoyed the campfire. Under the stars, under the moon, it was really nice experience and it was really nice day. हम सब काफ़ी थक गए थे, so we just wind up our day with that. Good morning everyone. This is day 2 of our trip and this is how beautiful it looks in the early morning. ये रिसोर्ट का मेन गेट है and resort is fully surrounded by greenery. आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सारे ही टाइप्स के आउटडोर गेम्स एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे. So in this beautiful morning,
मैंने अपनी 45 मिनट्स ऑफ डेली रनिंग एंड ब्रिस्क वॉक कंप्लीट की। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट sat down to take vitamin D under the sunrise and enjoy this beautiful morning. एंड उसके बाद हमने रिसोर्ट में डिलीशियस ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी वेंट फॉर स्ट्रॉबेरीज प्लकिंग। हियर यू कैन हैंड पिक बेस्ट क्वालिटी स्ट्रॉबेरीज एंड स्ट्रॉबेरी के अलावा यू कैन ऑल्सो बाय और फाइंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। It is basically a way to teach your children where this food come from and how it's grown. एंड अभी हम आए हैं मैप्रो रेस्टोरेंट में जो वाई में काफ़ी फेमस है। एंड अभी हम वापस रिसोर्ट आ गए और रिसोर्ट में हमारा स्वागत किया है बहुत सारी भेड़ बकरियों ने। मेरी डॉटर इनको देख के बहुत ही खुश हो गई थी। एंड देन वी हैड अवर टी एंड कॉफ़ी एंड थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद वापस हमने बॉनफायर किया। यू कैन सी माई डॉटर how happy she is. We all enjoyed a lot. It was a great 2 day trip to Wai, Maharashtra. I hope you have enjoyed this video. If you like it, please click on like, share it with your friends and family, and subscribe to my channel for more support. Thanks for watching till the end. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।